औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। स्टूडेंट्स, आप सब जो है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स उनका जो है वो उनके गेस्ट पेपर्स मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि साथ साथ आंसर्स भी हैं सारे चैप्टर के, जो है वो मल्टीपल चॉइस और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये सारे जो है आप एक दफ़ा देख लें, बाकी इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी। अल्लाह ताला हम सब की मदद करें। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ होम्योस्टेसिस। तो ये जो है कुछ मैं साथ साथ करती हूँ, बाकी जो है वो मैं जो है वो स्लो स्पीड पे करती हूँ। नेक्स्ट तो आप एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह जो पढ़े हुए होते हैं वो याद रहते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ एन एनिमल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, वो आपको पता है, वो होम्योस्टेसिस है। द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स दैट हैज़ अडाप्टेशंस ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव टू लिमिट वाटर लॉस आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। जिनके छोटे और थिक लीव्स होते हैं, जिन पे मोटी क्यूटिकल होती है। द एनवायरनमेंट वेयर एनिमल प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन दैट इज़ हाइपोटोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स, ठीक है। या राइट अ डिटेल नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बच्चे उसको प्लेनेरिया के साथ जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो प्लांट्स की एक्सक्रीशन भी पेपर में यूजुअली आ जाता है, ठीक है। यूरिया साइकिल पे अच्छी तरह से करना है आपने याद। तो ये जो है ये लीव्स हैं असल में, आपको पता है ना कि जितने भी ये हमारे डेसिडुअस ट्रीज़ हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो सारा वेस्ट भी जो है वो साथ ही जो है पौधे के ले जाते हैं। द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन कंपेयर टू अदर इज़ यूरिक एसिड। आपको पता है यूरिक एसिड में सबसे पानी कम चाहिए होता है बॉडी से रिलीज़ करने के लिए। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट, ये है इंसेक्ट्स। The excretory structures that deliver urine from kidney to urinary bladder is ureter. The metabolic waste that are ingested into the body and must be removed. तो ये ऑल ऑफ दीज का मतलब जितने नीचे भी जितने ऑप्शन दिए होंगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारे लगने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंडोथर्म। एंडोथर्म को पता है, जो जिनकी जो अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो एंडोथर्म्स नहीं होते, ये बाहर से हीट लेते हैं, अपनी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपको पता है ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं। नेम ऑफ द टाइप ऑफ अडॉप्टेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग। तो शिवरिंग जो है वो फिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंडोथर्म, देन इट्स अगेन एम्फीबियन। Animals that do not require to adjust their internal osmotic state actively are known as osmoconformers. Animals of the group of flatworms have simple tubular excretory system called as protonephridium. The incidence of calcium oxalate type stones are 70%. Mammalian kidney, including human, is adopted to conserve water up to 99.55%. Of all the kidney stones, the incidence of calcium phosphate type of stones are 15%. Fishes retains which of these chemicals to be protected against urea? तो फिश कौन सा अपने पास केमिकल रखती है? ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। Which of the following is heterothermic and it's bad? Metabolism of purine and pyrimidine produces significant amount of xanthine. Hydrophytes possess large leaves. आपको पता है जो वाटर में होते हैं उनके लीव्स बहुत बड़े होते हैं। What is endotherm? तो आपको पता है बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये एंडोथर्म्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है। विच ऑफ दीज इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? इट्स एटीपी। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिट्रिएटेड मसल इज इनिशिएटेड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ calcium ion. Vertebral column includes sacrum. Brachioradialis causes the uplift of radius. Thick filament in myofibril is made up of myosin. The animals who walk on tips of toes modified into hooves are termed as unguligrades. The fusion of four posterior vertebrae present in pelvic region form coccyx. Fibers, sclerids, and vessels are three types of sclerenchyma. Which of these cells have
angular thickening in the primary walls. Collenchyma, a condition in which palatine process of maxilla palatine fail to fuse, is cleft palate. Most efficient way of supporting the body is seen in mammals. Muscle is connected to bone by a tendon, and bone is connected by bone through ligament. Okay, the disease caused by low calcium in blood is called tetany. In thoracic region, the number of vertebrae is 12. Slightly elastic connective tissues that attach bone to bone are called ligament. An increase in plant girth due to the activity of vascular cambium is called secondary growth. Brain is protected by cranium and cardiac muscles are involuntary. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं इसको स्लो स्लो करती हूँ, आप इसको पॉज करते जाएं और एक दफ़ा रीड करते जाएं. 57 तक हो गया. ओके, रिप्रोडक्शन. ये आप सेव रखिएगा क्योंकि बाद में आपका इंशाल्लाह एमकेट का टेस्ट हो, फिर भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा. These all are really really very important MCQs. ये सिर्फ अभी नहीं, बाद में भी आपके काम आएंगे. If you go for BS, next you go for PPS examination. I also have uploaded scheme, एक दफ़ा scheme भी देख लीजिएगा. बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है सिनकोलॉजी एंड ऑर्टिकोलॉजी एंड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, और उसके अलावा जो है वो एवोल्यूशन के क्वेश्चन शॉर्ट बहुत इम्पोर्टेंट. होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से.
Okay, these all were your MCQs. Next we have short questions from homeostasis. इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये होम्योस्टेसिस के हो गए। इसके बाद ये सपोर्ट एंड मूवमेंट के। नेक्स्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रॉम chromosome and DNA. Next from cell cycle. Next from variations and genetics. Next from biotechnology. Plasmid is very important. Water probes. What are transgenic animals? What is cloning? Okay, and what is recombinant DNA? Next is evolution. The gene pool is very important. What are hydrothermal vents? And what I told you before, homologous and analogous organs. Okay, and ecosystem, and some major ecosystems. Then from man and his environment. ओके, अब जो है वो आप लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें, वो पीछे जाना पड़ेगा। सॉरी। ये इसमें फिर से एक दफ़ा शॉर्ट है, एक दफ़ा ये भी देख लीजिएगा। हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारे अब हमारे पास आ गए लॉन्ग। 15 में से 2 लॉन्ग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया भी आ जाता है और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी आ जाता है। इसके अलावा यूरिया साइकिल भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा एक दफ़ा, और फंक्शन ऑफ किडनी। ओके, 15 में से और भी हैं, वो भी देख लें आप। किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स, and what are paratonic movements in plant, what are joints, give structure of skeletal muscle, define and explain nerve impulse, and define central nervous system, structure and function of different parts of human brain, discuss role of hormones secreted by anterior lobe of pituitary gland, define parthenogenesis and explain its kind, explain human female reproductive system, give an account of sexually transmitted disease in men, also write the cause and effect of sexually transmitted diseases, discuss external factors affecting growth in plants, write a note on aging, describe its causes and symptoms, write a note on abnormal development, discuss Watson and Crick model of DNA, explain Michelson and Stahl experiment, write a note on genetic code, describe its characteristics, define and explain test cross, explain different patterns of sex determination, it's very important, discuss genetics of color blindness, explain Darwin theory of natural selection, this is again very important, and describe the evidence of evolution from comparative anatomy. एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाला जो है वो सारा ही क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है एविडेंसेस हमारे पास जियोलॉजिकल है, हमारे पास
जो है वो ये है, पूरा एक दफ़ा पढ़ लें. डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रिक्वेंसी, व्हाट आर endangered species and what measures could be adopted for their environment protection. Define ecosystem. Describe various components of an ecosystem. Describe different stages of succession in xerosphere. Write a note on grazing. Define biochemical cycles. Explain nitrogen cycle with the help of diagram. Carbon cycle भी कर लीजिए क्या सही तरह से. ब्रीफली डिस्कस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और याद रखिएगा बेटे, पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है. ओके, ब्रीफली डिस्कस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. राइट ए नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड. एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर biology. Good luck all students. If you need some help, if you need to know something about bio, do let me know. अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.